हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, what is the first question? Figure 8.6 shows the capacitor made of two circular plates, each of radius 12 centimeter. R equals to 12 centimeter. You can say 0.12 meter. Separated by 5 centimeter, means D is equals to 5 centimeter. You can say 0.05 meter. The capacitor is being charged by external source not shown in the figure. The charging current is constant and equal to 0.5 ampere. 15 ampere, sorry. So this is the current, 0.15 ampere. Okay, calculate the capacitance and rate of charge of potential difference between plates. Actually, it is change. Okay, so first of all, let us calculate capacitance. C is equals to what you will get, A epsilon 0 upon D. Now, A means what? Pi r square. Epsilon 0 upon D. You have a value of a pi, you have a value of a r, you have a value of a D. Okay, and if you place this value of all pi r epsilon 0 and all that, you will get answer 80.1 picofarad. Okay, now what is asked? Rate of change of potential. See, q is equals to what? CV, right? So dq by dt is equals to what? C dv by dt. But dq by dt is what? Current. Means what? I is equals to C dv by dt, implies dv by dt is equals to what? You can say I upon C. I upon C. Now what is the value of I here? I is a 0.15 and capacitance value 80.1 picofarad, means here 10 raised to 12. Clear or not? So by putting all this value you will get answer 1.87 into 10 raised to 9, 1.87 into 10 raised to 9 volt per second. Okay. What is next? We have to calculate. Obtain the displacement current across the plate. Friends, let me tell you, whatever current flow here, that is the conduction current. And when you come in the space between the capacitor, it becomes equal to displacement current. Not here, but everywhere. Okay, the total current is the displacement current. So if it is asked, what is the displacement current? Okay, and we have discussed that also, that ID equals to IC and it will be equals to 0.15 ampere. Okay. Now, third, is Kirchhoff's first rule, means junction rule, valid at each plate of the capacitor? Yes. Kirchhoff's junction rule means what? Whatever current is coming, the same current is going outside. Yes, 0.15 ampere current is coming. And how much current is going here? 0.15. And how much current going here? 0.15 ampere, like this. So you can say yes, it is applicable here. Okay, fine. Let's solve next example. This is 8.2. What is given? A parallel plate capacitor, see figure 8.7, made of circular plate, each of radius 6 centimeter. Radius is given. Capacitance is given, and the capacitor is connected to 230 volt AC supply. Vrms is given. Students, what is given? Vrms supply to the angular frequency 300 radian per second. So what is given? Omega. What is the RMS value of conduction current? What is asked? What is the RMS value of conduction current? Now let me tell you, IRMS is equals to Vrms upon XC. Okay, we have discussed that in the AC, and XC is 1 upon omega C. So what you can say? Vrms into omega into C. See, you have a Vrms 230 volt. You have a omega how much? 300 radian per second, and capacitance 100 picofarad. So if you put all these value, you will get answer as a 6.9 microampere. Okay. Now, is the conduction current equal to the displacement current? Yes, we have proved it. Determine the amplitude of B
at a point 3 centimeter from the axis between the plate. Means what? Between the plate at how much distance? 3 centimeter. And what is the radius? 6 centimeter. See, do you know the formula for the magnetic field inside the wire? That is the mu 0 IR upon 2 pi a square. See, let me tell you what is this all term means. This is a wire is having a radius A. Okay, and how much current is flowing through the wire? I. Okay, and here is the axis. At distance R, at distance R, we want to find out the magnetic field. So you can apply this formula. Okay, and here you can say that the same thing is occur. Here current is flowing like that, and how much current is flowing? Displacement current is flowing. So here you can put the value of mu 0. How much it is? 6.9 micro, right? So 6.9 into 10 raised to minus 6. And R, what is the R? 6 centimeter? No, it is the distance. This distance, which is 3 centimeter. 3 into 10 raised to minus 2 mu 0 IR upon 2 pi a square. A square means a radius square. How much is the radius? 6 centimeter. So 6 is, into 636 into 10 raised to minus 4. So if you place all these value, okay, then you will get answer as, see, this is the BRMS. Okay, what value you will get regarding that? BRMS. Okay, this is value of the BRMS. Okay, but if you want to find out a B0, then B0 will be is equals to what? BRMS into root 2. BRMS into root 2. So simply whatever value is given here, just multiply it with a root 2. Then you will get value of a B0. Which value? B0, and its value is 1.63 into 10 raised to minus 11 Tesla. See, magnetic field is always much less. What physical quantity is same for X-rays of wavelength this, red light of wavelength this, and radio wave of wavelength this? Okay. Which quantity? One quantity. Their speed, please write. Their speed is same in vacuum. How much? 3 into 10 raised to 8 meter per second. It's not only light which is moving with this much speed. Okay, all electromagnetic wave are moving with this much speed. Okay, and light is one of among that. Now, 8.4. A plane electromagnetic wave travels in a vacuum along z direction. In which direction it is traveling? Z direction. What can you say about the direction of electric and magnetic field vectors? Okay, fine. They can be either in the x or in the y. See, let me tell you. Dash cross dash is equal to dash as we are doing. So this is the direction, right? So here I will write k cap. So how many options we have? First of all, suppose electric field is in the positive x, and magnetic field will be in the positive y. I cap cross j cap is equal to k cap. Okay. Now I cap cross, sorry, minus I cap cross minus j cap is equals to also k cap. Now j cap cross minus I cap is equals to k cap, and minus j cap cross I cap minus j cap cross I cap also equal to k cap. So you can say that electric field may be in the plus axis minus x axis, plus y axis minus y axis, and correspondingly magnetic field will be in the plus y minus y and minus x plus x. So you can say that generally electric field and magnetic field will be in the xy plane. Okay. Now, if the frequency of the wave is a 30 megahertz, what is its wavelength? Very simple, students. Just apply this formula. Lambda is equals to C by F. What is C? 3 into 10 raised to 8. And what is the F? Frequency, 30 megahertz. So 30 into 10 raised to 6. So 1 and here 7. So here 3 get cancelled. You will get answer as a 10 meter. Okay, fine. Hmm. A radio can tune
into any station in 7.5 megahertz to 12 megahertz band. What is the corresponding wavelength band? See, this is frequency number 1. This is frequency number 2. So you have to find out lambda 1. Lambda 1 equal to C upon F1, and lambda 2 is equals to C upon F2. You have a value of a C and you have a value of a F1 and a F2 also. Okay, so just replace this value and you will get answer is that for less frequency you will get more wavelength, that will be 40 meter. Okay, and for more frequency you will get less wavelength, and that will be the 25 meter. Okay, now this is 8.5 done. 8.6, a charged particle oscillates about its mean equilibrium position with a frequency of 10 raised to 9 Hz. What is the frequency of the electromagnetic wave produced by oscillator? Same. Same means what? 10 raised to 9 Hz. Okay. This is the much needed information, students. Whatever is the frequency of oscillator or charged particle, same will be the frequency of EM wave. Okay. Frequency of EM wave and the oscillator particle will be same always. Now next 8.7. The amplitude of the magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave in vacuum B0 is this much, 510 nanotesla. What is the amplitude of electric field part of the wave? Okay, how you will get? E0 upon B0 is equals to C. Very simple, students. Okay, and what you have to find out? E0. So what you can say, E0 is equals to B0 into C. So just put the value and you will get answer nearly 153 Newton per Coulomb. Okay, very simple. 8.7 done. Now 8.8. Suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is this E0, and that is frequency F is equals to 50 megahertz. Determine the B0, omega, K and lambda. Okay, many things we have to determine. So let me erase it and you will try in that time. Okay, जब तक मैं इरेज करता हूँ उस टाइम में काम करो, अब ट्राई कर लो. ठीक है, अच्छी तरीके से. हाँ बच्चों, देखो अगर आपको सारे फॉर्मूला पता है, कैरेक्टरिस्टिक सारी पता है, तो आप इजीली ये कर सकते हो, बहुत इजीली ये कर सकते हो. ठीक है, कौन सा? 8.8. चलो मैं E0 बोलता हूँ. E0 क्या है? 120 न्यूटन पर कूलम. And frequency, what is frequency? 50 megahertz. Okay, determine the B0. So first formula, E0 upon B0 is equals to C. So from that, B0 is equals to E0 upon C. You have a value of E0 as well as you have a value of for C. So you can calculate it and you will get answer as 400 nanotesla. See, you have to calculate. It's you who are going to face the exam, whose future is being made here. Okay, omega is equals to what? Omega equal to 2 pi f. Omega equal to 2 pi f. Simply put the value of f. Okay, and you will get answer as 3.14 sorry, into 10 raised to 8 radian per second. That is the value of omega. K, students, omega upon K equal to C. So K is equals to omega upon C. So put the value of omega and put the value of C. Or a K is equal to 2 pi by lambda also you can write directly. So but I'm writing here omega upon C. Okay, value of a K. So value of a K you will get is that 1.05 radian per meter. 1.05 radian per meter. Okay, lambda. Now K is equals to what? 2 pi by lambda. So lambda 2 pi by K is equal to lambda. Yes. So K value, yes, you have. So easily you can calculate the wavelength, and the answer of that wavelength lambda
इज द 6 मीटर. हाउ मच इट इज 6 मीटर. बच्चों मैं बोल रहा हूँ आपको कौन सी वैल्यू कहाँ पे रिप्लेस करनी है, ठीक है. तो इजीली आप ये कर सकते हो. फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ई एंड बी. ओके, चलो ये तो आप कर पाओगे कि नहीं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी ई और बी. तो ई इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड बी इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको. तो कर दो. चलो कैसे देखो. अभी मैं इसको इरेज करके लिखता हूँ, तब तक आप ट्राई करो. मैं बोल रहा हूँ ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओके, लिख लिया. बी इक्वल टू बी जीरो, बी फॉर बॉम्बे. ओके, आई एम सेइंग रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड. देखो मैं क्या बोल रहा था. ई इक्वल्स टू ई जीरो साइन omega t minus kx. Omega k all value we have already derived. Okay, and b equals to b0. See, e0 value also we have calculated. B equal to b0 sine omega t minus kx. Okay, wave is traveling in the x direction. Wave is traveling in the x direction. So suppose it is in the y direction. So here j cap, and it will be in the z direction. So it will be y z direction. So k cap. Okay. Wave is traveling in the positive x. How we come to know that? Minus kx through this. Okay. Fine. Now, which example we have to solve? 8.9. The terminology of different parts of the electromagnetic spectrum given in the text. Use the formula E is equals to HF, H nu. Okay, I think you have come across this formula in chemistry also. For energy of the quantum radiation photon, and obtain the photon energy in units of eV for different part of the electromagnetic spectrum. In what way are the different scale of the photon energies that you obtain relates to the source of electromagnetic radiation. देखो बच्चों, इतना हमें इसमें नहीं करना है, हमें सिर्फ E इक्वल टू एच एफ फाइंड करना है. तो E इज इक्वल्स टू एच एफ करेंगे तो F इज इक्वल टू तो C बाय लेमड़ा है. आपको क्या करना है, जो पिछले सेशन में मैंने टेबल दिया था उस टेबल को फिर से एक बार देख के सारी वेवलेंथ रेंज जो उसमें दी है, ठीक है, उस लेमड़ा को यहाँ रिप्लेस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. एच का आंसर, एच की वैल्यू क्या है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34. सी क्या है? 3 इंटू 10⁸8. और लेमड़ा आपको रखनी है. दिस आंसर विल बी इन द जूल. ओके, वॉट एवर आंसर इन द जूल, ई इन द जूल divided by 1.6 into 10 minus 19. That answer, that energy will be in the electron volt. Okay, like that. 8.10, 11 and 12 that already we have discussed. Okay, अब इतना ज्यादा डिस्कस करने का बाकी भी नहीं रह गया, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है सब. यूज द फॉर्मूला लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू दिस. याद रखो क्या फॉर्मूला है. लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन. मीन्स 0.29 इंटू 10⁻⁻² मीटर केल्विन. ओके. To obtain the characteristic temperature range of the different part of the electromagnetic spectrum, what do numbers that you obtain tell you? अच्छा, मतलब कि सबकी डिफरेंट डिफरेंट आपको टेम्परेचर फाइंड करना है. कैसे? आपको वेवलेंथ रेंज दी गई है, फिर से वो टेबल याद करो. ठीक है, टेबल याद करोगे तो पता चलेगा आपको वेवलेंथ रेंज दी गई है. देखो मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ. ये टेक्स्ट बुक है. सॉरी, ये टेक्स्ट बुक नहीं है, ये तो मैंने दूसरी खोल ली थी. ओके, तो वो टेबल आपको मैंने वैसे भी पिछले सेशन में आपको बोला ही था कि ये टेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का. तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, तो उस वेवलेंथ को अगर आप यहाँ रिप्लेस करते हो तो आपके पास ये तो देखो 0.29 ये तो कांस्टेंट ही है. तो अगर आपके पास लेमड़ा की वैल्यू है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो कि नहीं. तो आपको ऐसा करना है. ठीक है, क्या करना है समझ में आया. पिछले टेबल में हमने रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, वी, यू, एक्स, जी सबकी वेवलेंथ दी थी क्या. हाँ, तो सबकी वेवलेंथ को बारी बारी पहले लेमड़ा इसकी यहाँ पे रिप्लेस करो और टेम्परेचर फाइंड करो. फिर इसका लेमड़ा फाइंड करो, इसका टेम्परेचर फाइंड करो, इसकी लेमड़ा पुट करो यहाँ टेम्परेचर.
फिर आपको पता चलेगा, हाँ भैया क्या, कि इतने टेम्परेचर पे रेडियो वेव एमिट होगी, इतने टेम्परेचर पे माइक्रोवेव एमिट होगी, इतने टेम्परेचर पे ये समझ में आया। ओके, इक्वेशन आपको कौन सा कायम रखना है, लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू बी। ओके, अब जो इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्योरली इंफॉर्मेशन बेस्ड है बच्चों, आपको वो अच्छी तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। क्या है, गिवन बिलो आर सम फेमस नंबर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ द फिजिक्स, स्टेट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच इट बिलोंग्स। कहने का मतलब क्या है कि ये कौन सी वेव में आते हैं, ये हमें कहना है, ठीक है। देखो वेवलेंथ रेंज अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो, पहला है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर ये हो गई रेडियो, रेडियो की वेवलेंथ रेंज अगर आप बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखोगे तो दूसरा 1057 मेगाहर्ट्ज, अच्छा यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी दी गई है बच्चों, वेवलेंथ तो दी गई नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले लेमडा इज इक्वल्स टू सी बाई एफ करके वेवलेंथ फाइंड करनी है। एक बार आप वेवलेंथ फाइंड करोगे बाद में आपको पता चलेगा कि भैया ये भी किसमें है, रेडियो वेव में ही है। किसमें है बच्चों, रेडियो वेव में। सी 2.7 केल्विन टेम्परेचर, अच्छा यहाँ पर तो टेम्परेचर दिया गया है, वेवलेंथ तो दी गई नहीं है, तो अभी हमने देखा ना लेमडा इंटू टी इज इक्वल्स टू क्या देखा था, 0.29 इंटू 10⁻², मीटर केल्विन। तो यहाँ पर टेम्परेचर रख के लेमडा फाइंड कर लो, तो लेमडा फाइंड करके आपको पता चलेगा कि भैया ये कौन से रीजन में आती है, तो ये रीजन में आती है माइक्रोवेव। किस में आती है, माइक्रोवेव। अभी 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम, ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता है, ये विजिबल में आती है। किसमें आती है, विजिबल। क्यों, बिकॉज वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल इज व्हाट, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये बीच में आ गया ना। ओके, नाउ 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब भी ऐसा दिया हो ना बच्चों, एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन द 57 फेरस न्यूक्लियस एसोसिएटेड विद द फेमस हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक है। तो ये एक्सरे प्रोड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि मेटालिक एलिमेंट है, हमने बोला था, ठीक है। मेटालिक एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट करो, आपको एक्सरे मिलेगी। अच्छा, अभी इसका आंसर देखिए, द लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स, व्हाई। अच्छा, वो शॉर्ट वेव बैंड क्यों यूज करते हैं, बिकॉज आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स देम। ओके, अदरवाइज क्या होगा, वो आयोनोस्फीयर को चीर के चली जाएगी दूर, तो फिर कर ही नहीं पाएंगे हम कम्युनिकेशन, इसलिए इट इज नेसेसरी टू यूज सैटेलाइट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, व्हाई। अच्छा, सैटेलाइट हम क्यों यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए, ठीक है। बिकॉज these signals are not reflected by ionosphere। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ, ये हमारी अर्थ है, आप यहाँ पे हो, आपको अपने दोस्त को यहाँ पर मैसेज भेजना है, तो क्या दौड़ते हुए जाओगे और मैसेज दे के आओगे ऐसा नहीं, ये आयोनोस्फीयर है, तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे टीचिंग आएगी। लेकिन अगर ये आयोनोस्फीयर को चीरती हुई चली गई तो फिर हमें यहाँ पे क्या रखना होगा बच्चों, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट लेगी और देगी इंफॉर्मेशन। ओके ओके, optical and radio telescope are built on the ground, but X-ray astronomy is possible only from satellite orbiting the earth। अच्छा, देखिए, ऑप्टिकल मतलब कि लाइट वेव और रेडियो टेलीस्कोप ये ग्राउंड से ही हो सकती है, ठीक है, मतलब कि अर्थ पर से ही आप कर सकते हो, लेकिन एक्सरे से ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कि एक्सरे आप दूर से नहीं भेज सकते, मतलब कि किसी प्लैनेट पे एक्सरे भेजनी है तो आप अर्थ पर से नहीं भेज सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक्सरे ऑब्जॉर्ब कर लेता है। क्या, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब एक्सरे। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर दूसरा प्लैनेट है, यहाँ वैक्यूम है,
तो अगर मैं एक्सरे यहाँ से भेजूंगा ना तो एटमॉस्फेयर बोलेगा नहीं भैया मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मेरे पास ही रहे, तुझे मुझे तू मुझे बस अच्छा लगता है। लेकिन अगर लाइट वेव भेजेंगे तो वो किसी से रुकने वाली नहीं है, वो डायरेक्टली चली जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ओनली, लाइक दैट। द स्मॉल ओजोन लेयर ऑन टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर इज क्रूशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। वाई? बच्चों आपको सबको पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, शॉर्ट में ही आपको बोल दूंगा, मैं क्या बोल दूंगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करती तो क्या होता, क्या होता, अब नहीं होते। इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर would its average surface temperature is higher or lower than what it's now? Lower. क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट एब्सेंट होता, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है लेकिन वही एब्सेंट है, तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे, होंगे तब जिएंगे ना। Some scientists have predicted that global nuclear war on the earth would be followed by severe nuclear winter। मतलब कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा अर्थ पे, विथ अ devastating effect on life on the earth, मतलब कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। What might be the basis of this production? Very simple, this is the earth and these are the nuclear waste and this is the sun। Okay, so when sun radiation coming here, this nuclear waste will absorb it. IR absorbed, UV absorbed, sunlight, light absorbed. This nuclear waste has so much capacity to absorb anything. So if everything get absorbed, especially if IR get absorbed, which is also known as the heat wave, then from where we will get the heat? हीट कहाँ से लाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हीट नहीं होगी तो क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है। ओके, तो ये थी एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।